So this is the question number 14 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, a statement has been given to you which is stated x equals to f dot read lines, जो क्या कर रहा है आपका एक टेक्स्ट फाइल ऑब्जेक्ट f से रीड करने की हेल्प कोशिश कर रहा है. नाउ यू नीड टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डाटा टाइप ऑफ x, यानी कि जो x का डाटा आपने जो वेरिएबल रिसीव किया है उसका रिटर्न टाइप क्या होगा आपका. बेसिकली इट इज आस्किंग फॉर रिटर्न टाइप ऑफ रीड लाइंस फंक्शन. Okay, so in order to answer this one, first of all, we need to be aware different type of reading functions we have in a text file. What are the functionalities of them and what are the return types of those functions? Okay, so I want to take a note of this one. चाहे तो आप screenshot भी ले सकते हैं. So basically we have three methods or three functions to read the data from a file. Okay, first one is read function. ये फंक्शन जो भी है आपके इट विल बी यूज विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट. अब फाइल ऑब्जेक्ट क्या है आपका, जब भी आप फाइल ओपन करते हो तो जब फाइल आप ओपन करते हो तो जो डाटा ऑब्जेक्ट आप रिटर्न रिटर्न करते हो दैट इज नोन एज फाइल ऑब्जेक्ट. ओके, अगर एफ आपका ऑब्जेक्ट है तो इट विल बी एफ डॉट रीड. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द फंक्शनैलिटीज वी हैव. फर्स्ट वन इज वी हैव रीड फंक्शन. रीड फंक्शन क्या काम करता है, बेसिकली आपका किसी भी टेक्स्ट फाइल से रीड करता है n बाइट्स ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n. नाउ उसका रिटर्न टाइप क्या है आपका, स्ट्रिंग. रीड लाइन फंक्शन क्या काम करता है आपका, सिंगल लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ बाइट्स आप रीड करना चाहते हो वो आपको अलाउ करता है. अगर आपने n की कोई वैल्यू पास नहीं करी तो क्या करेगा, कंप्लीट लाइन रीड कर लेगा. ओके, इसका रिटर्न टाइप भी क्या है आपका, स्ट्रिंग. नाउ कमिंग बैक टू रीड लाइंस, ये क्या करता है आपका, इट अलाउ अस टू रीड ऑल द लाइंस ऑफ द फाइल. तो इस केस में क्या होगा, इट विल बी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. ओके, so now coming back to our question, it is a simple one. Answer is option number B because what we have told you, readlines का function क्या है आपका, list of string. तो उसका डाटा टाइप क्या हो गया आपका, it will give you list. Okay, hence option number B is the correct one. So based on the content we have received in this video, I want you to answer this one in the comment box कि इस particular question का क्या आंसर होगा. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.